On Wednesday, we brought you the poll of polls in Maharashtra, a figure that, while giving the edge to the ruling Mahayuti alliance, still predicted a reasonably close result. Now, today, though the picture has changed, 3 new exit polls have been released today. Now, one of them, See Voters, says it's unable to come up with a final picture after 24 hours. It gives 112 for the Mahayuti, 104 for the Maha Vikas Aghadi. But importantly, it says 61 seats are still close to call for it. But 2 other polls, that is Access My India and today's Chanakya, have given clear victories to the Mahayuti, and that changes the poll of polls decisively in favor of the ruling alliance. You can see that graphic on your screens now. This updated poll of polls now shows 164 for the Mahayuti, 112 for the Aghadi. But as I always say, these are exit polls. Take them with a pinch of salt. महाराष्ट्रामध्ये मतदान वाढलेलं आहे, टक्केवारी वाढलेली आहे. आजपर्यंतचा अनुभव आहे की जेव्हा जेव्हा टक्केवारी वाढते त्याच भाजप आणि मित्र पक्षाला त्याचा फायदा होतो असं प्राथमिकदृष्ट्या दिसतंय. कारण आम्ही पण आता बूथचे जे सर्टिफिकेट्स गोळा केलेले आहेत तर मी जवळपास 25-30 मतदारसंघांमध्ये फोनवर बोललो तर त्यांचे प्राथमिक फीडबॅक आहे की महिलांची टक्केवारी वाढली आहे. शक्यता आहे की लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांची टक्केवारी वाढली असण्याची शक्यता नाकारता येईल. Now, what's making the exit polls particularly difficult to read is that both Mumbai and Maharashtra have seen turnouts that have shattered a 3-decade record. There has been a 3% increase in voter turnout from the Lok Sabha elections held just 6 months ago, which means 29 lakh voters who did not vote last time exercised their right yesterday. This 3% is significant enough to swing the fate of Maharashtra's next government. Now, with just 2 days left for the results of the Maharashtra polls to be declared, a war of words has emerged between allies, the Congress and the Shiv Sena UBT. Now, State Party Chief Nana Patole spoke about Congress leadership in the government formation, but faced immediate opposition from Sena leader Sanjay Raut. He said that declarations like this need to come from the party's high command. Exit polls have predicted a Mahayuti victory, but Marathi regional polls have given the edge to the Maha Vikas Aghadi. Now, neither the Mahayuti nor the Maha Vikas Aghadi have a clear chief minister face at this point, and the final numbers in the assembly will naturally play a big role in this decision. कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी. उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है. मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे. अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए. झगड़ा सुलझेगा कैसा? पहली बात तो ये झगड़ा नहीं है. हाँ. जिस किसी को भी लग रहा है कि झगड़ा है, हाँ. ये झगड़ा नहीं है, ये अपना विचार प्रदर्शन करने का एक तरीका है. नाना पटोले जी कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनकी इच्छा होगी कि उनका सीएम बने. हमारे नेता संजय राउत साहब हैं, संजय राउत साहब की इच्छा है कि हमारा सीएम बने. हमारी भी इच्छा है कि हमारा सीएम बने.